इस लाइव हो गया है। आई गेस लाइव हो गया। ओके सो हेलो गाइस, कैसे हो यार सब लोग। आई नो कोई नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वर्ड बढ़ा करके बोल देता हूँ क्या क्या होने वाला है। सो हैप्पी न्यू ईयर सभी को, पहली बात तो। एंड मेरा जो है परसों से पीयू होने वाला था, लेकिन अब नहीं है। हम लोग गए थे बात करने डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने जो है पोस्टपोन कर दिए थोड़े से पीयू। एंड सिंस उन्होंने पोस्टपोन कर दिए हैं तो वी हैव गॉट लाइक 10 days मोर। 11 से अब शुरू है। सो अच्छी बात है। अभी जो है PSM पढ़ूंगा मैं। लाइक गोल यही है कि 1 घंटे 1.5 घंटे में जितने लेक्चर्स हो पाए, लेक्चर्स का जितना हो पाए उतना मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा 1.5 घंटे 2 घंटे में। एंड देन फिर रात में एक सेटिंग और लगाऊंगा एंड उसमें लाइव नहीं आऊँगा। अभी लाइव आ रहा हूँ शाम को। तो शुरू करते हैं अब बिना किसी टाइम वेस्ट करे, क्योंकि वैसे टाइम बहुत कम है। शुरू करते हैं, चलो। कहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं? PSM ऑफ कोर्स अर्पित से पढ़ रहा हूँ। पार्क पढ़ने का टाइम नहीं है, एंड इवन मैं कहूँगा कि अर्पित पढ़ने का भी टाइम नहीं बचा है अब तो। चैप्टर इज इन्वायरमेंट एंड हेल्थ। आधा कर लिया हूँ मैं इसको। वेंटिलेशन वाला टॉपिक कर रहा था अभी। Not only the replacement of vitiated air by a supply of fresh outdoor air, but also control of quality of incoming air with regard to its temperature, humidity, and purity, with a view to provide a thermal environment that is comfortable and free from risk of infection. Not just mere replacement of vitiated air, but by a supply of fresh air, but also control the quality of the incoming air with regard to its temperature, humidity, and purity. Temperature, humidity, and purity, with a view to provide a thermal environment that is comfortable and free from the risk of infection. Standards of ventilation. Floor space is required per person is 50 to 100 square feet. Cubic space 3000 cubic feet per person per hour. Air changes per hour is equal to total hourly air supplied to the room upon cubic capacity of the room. Total hourly air supply of the room upon cubic capacity of the room. Living room, drawing room, 3 air change per hour. वर्करूम में 46 होती हैं. हाइट इन एक्सेस. टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन. नेचुरल वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन. दो टाइप के वेंटिलेशन होते हैं. एक होता है नेचुरल वेंटिलेशन, एक होता है मैकेनिकल वेंटिलेशन. नेचुरल वेंटिलेशन में यानी कि क्रॉस वेंटिलेशन हो गया, एस्पिरेशन हो गया एंड परफ्लेशन हो गया. हेलो, क्या टॉपिक पढ़ रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ अपना ये एनवायरमेंट एंड हेल्थ, उसमें वेंटिलेशन. इसलिए कहता हूँ पहले ज्वाइन करा करो. नेचुरल वेंटिलेशन तो विंड इनइक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर एंड डिफ्यूजन, 3 कंपोनेंट होते हैं विंड में. क्रॉस वेंटिलेशन, एस्पिरेशन हो गया. गुड, तू भी पढ़ भाई. तू भी ऐसे क्या कहते हैं बुक लेकर के बैठ जा, साथ में पढ़ते हैं दोनों. विंड क्रॉस वेंटिलेशन होता है, एस्पिरेशन होता है, परफ्लेशन होता है. क्रॉस वेंटिलेशन, दो windows are facing each other. Aspirate when this obstruction air passes by exerts a suction at its tail end. Perflation when wind blows through a room. Inequality air exists when slightly heated and is coming from the open corner of height. Enter the room through inlets placed low. Greater the temperature, greater the velocity of the incoming air. Diffusion passes through smallest opening and diffusions. मैकेनिकल वेंटिलेशन, एग्जॉस्ट वेंटिलेशन होता है, एग्जॉस्ट फैंस के थ्रू होता है. वैक्यूम क्लीनिंग causes fresh air to enter through the room through windows. Exhaust fan placed high near the room because more of upper heated light air. Fresh air is blown into the room by centrifugal fans. Plenum ventilation यानी कि fresh air blown into the room by centrifugal fans so as to create a positive pressure and displace the vitiated. Plenum propulsion system of supplying air to air conditioning building and factories इन ducts के थ्रू आता है.
Noise ventilation, combination of exhaust and plenum. Air conditioning of the continuous control of all factors affecting both the physical and chemical conditions of the atmosphere, temperature, humidity, and air movement. Simultaneous control of all factors affecting both the physical and chemical conditions of atmosphere, including temperature, humidity, and air movement. Transition room क्या होता है? Where the temperature differences is large between outside atmosphere and air conditioned room. Transition room is provided to prevent sudden exposure to high temperature. Okay. Noise. Noise. Wrong sound in the wrong place, wrong time. Wrong song, wrong place, and wrong time. Pressure, horns, loudspeakers. Loudness, intensity, decibels में होती है. 60% decibel normal pronunciation होता है. 35 decibels होती है. फिर उसके बाद maximum acceptable noise level 85 decibel maximum accepted noise level होता है. Daily maximum tolerable sound level. Daily maximum tolerable sound level. Auditory fatigue आता है अपने 4000 hertz 90 permanent hearing loss, threshold of pain, permanent mechanical damage 20 infrared ultrasonic. इफेक्ट ऑफ नॉइज एक्सपोजर क्या हो सकता है? ऑडिटरी इफेक्ट होता है या नॉन ऑडिटरी इफेक्ट होते हैं. ऑडिटरी इफेक्ट में ऑडिटरी फटीग हो गया, विस्लिंग एंड बजलिंग इन द ईयर हो गया. डिफरेंस होता है, टेम्परेरी हियरिंग लॉस हो सकता है डिसअपियर्स इन 4 आवर्स. परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है 100 डेसिबल्स पे. ऑक्यूपेशनल हियरिंग लॉस क्या होता है? डिपेंडिंग मेंबर रिप्चेस एट 160 डेसिबल्स. नॉन ऑडिटरी इफेक्ट में क्या होता है? अनोयंस होती है, इरिटेटेड शॉर्ट टेम्पर हो जाता है आदमी. फिजियोलॉजिकल चेंजेस, राइज इन बीपी हो सकता है, इंक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीज इन स्वेटिंग एंड इंटरफेरेंस विद स्लीप हो सकता है. इंटरफेरेंस विद स्पीच 500 हर्ट्ज पे. एफिशिएंसी रिडक्शन इन वर्क आउटपुट हो सकता है. कंट्रोल ऑफ नॉइस के फॉर प्लानिंग इन सिटीज कर सकते हैं. कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? प्लान कर सकते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज को अवे फ्रॉम सिटीज विद ग्रीन बेल्ट्स इन बिटवीन. व्हीकल को कंट्रोल कर सकते हैं. अकॉस्टिक इंसुलेशन ऑफ बिल्डिंग्स कर सकते हैं. डिचार्ज बिल्डिंग एंड सील विंडोज. प्रोटेक्शन ऑफ एक्सपोज पर्सनस एम्प्लॉयज दे सकते हैं. एयर मफ दे सकते हैं. लेजिस्लेशन, नो हॉर्न जोन्स, नो डीजे आफ्टर 10 PM. रेडिएशन रेडिएशन सोर्स है, नेचुरल सोर्स, मैन मेड हो सकता है. कॉस्मिक है, जेट पायलट को एक्सपोजर है. एनवायरमेंट में ट्रेस रेडिएशन, एटमॉस्फेयर रेडिएशन, कंबशन कंटिन्यू यूरेनियम, रेडियोएक्टिव गैसेस, रेडोन एंड थोरॉन एटमॉस्फेयर. इंटरनल रेडिएशन हो सकता है, रेडियोएक्टिव मैटर स्टोर्ड इन द बॉडी. कार्बन 14 रेडियोएक्टिव मटेरियल मैटर स्टोर्ड इन द बॉडी 14 हो सकता है.
हैंडमेड रिसोर्सेज पेशेंट यूरोलॉजिस्ट मेडिकल टेक्नीशियंस हैंडल करते हैं उसको। रेडियोएक्टिव फॉर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो सकते हैं मिसलिनियस पीवीसी टाइप्स आयोनाइजिंग नॉन आयोनाइजिंग होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सरे कॉर्पस्कुलर रेडिएशन अल्फा बीटा पार्टिकल हो सकते हैं। नॉन आयोनाइजिंग में अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड माइक्रोवेव रेडिएशन यूनिट्स हैं दो। इफेक्ट्स क्या होते हैं? सोमैटिक जेनेटिक हो सकते हैं, दो तरीके के सोमैटिक एंड जेनेटिक होते हैं। सोमैटिक इज इमीडिएट रेडिएशन सिकनेस एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम डिलेड ल्यूकेमिया कार्सिनोजेंस फीटल डेवलपमेंट नॉर्मली शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ हो सकता है। जेनेटिक में क्रोमोसोम म्यूटेशन हो सकता है, पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ हायर डोज ऑफ रेडिएशन। ब्लड चेंजेस होते हैं, मेजर ब्लड चेंजेस होते हैं। रेडिएशन प्रोटेक्शन कैसे करते हैं? लीड शील्ड्स होती हैं, लेडी प्रॉन्स होते हैं। 0.5 मिलीमीटर ऑफ लेड होता है उसमें, डॉसीमीटर होता है एंड टेल टिप एज होता है। एलआरआ एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। एलआरआ क्या होता है? एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। एलसीआरपी मिशन ऑफ रेडियो प्रोटेक्शन होता है एंड एटॉमिक लाइट। हाउसिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया क्या होते हैं? अर्बन हाउसिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं साइट एलिवेटेड एंड सबसॉइल वाटर बिलो 10 फीट होना चाहिए। बिल्ट अप एरिया 2/3 ऑफ टोटल एरिया होना चाहिए। वॉल्स 9 इंच ब्रिक वॉल होनी चाहिए। रूफ 10 फीट की होनी चाहिए, ग्रेटर दैन 10 फीट होना चाहिए। फ्लोर एरिया 50 to 100 स्क्वायर मीटर पर पर्सन होना चाहिए। क्यूबिक स्पेस 500 cubic feet per capita. Some windows 20%, 1/5 of floor area. Height should not be more than 3 feet from floor. Doors plus windows 40% होना चाहिए, 1/5 of floor space. Daylight factor 1% of half of floor area. Kitchen separate impervious floor provided with water supply and drainage. Scientific must be present in every house. कहाँ होना चाहिए? साइट होनी चाहिए इसकी, एलिवेटेड होना चाहिए, सबसॉइल वाटर लेवल 10 फीट के बिलो होना चाहिए इसके। फिर कितना होना चाहिए? 2/3 बिल्ट अप एरिया ज़मीन का 2/3 ऑफ टोटल एरिया होना चाहिए। दीवार 9 इंच ब्रिक से बननी चाहिए। रूफ 10 फीट से ज़्यादा की होनी चाहिए। फ्लोर एरिया 50 to 100 स्क्वायर फीट पर पर्सन होना चाहिए। 50 to 100 स्क्वायर फीट पर पर्सन होना चाहिए। फ्लोर एरिया हो गया। फिर क्यूबिक स्पेस, पता नहीं, क्यूबिक स्पेस 500 क्यूबिक फीट पर कैपिटा से होना चाहिए। विंडोज 20% यानी 1/5 ऑफ द फ्लोर एरिया होना चाहिए। हाइट शुड नॉट बी मोर देन 3 फीट। फिर डोर्स प्लस विंडोज 2/5 ऑफ द टोटल फ्लोर एरिया होना चाहिए। 2/5 यानी 40% हो गया अपना। डिलाइट 1% ओवर हाफ ऑफ फ्लोर एरिया, 1% ओवर हाफ ऑफ फ्लोर एरिया। किचन सेपरेट होना चाहिए, इम्परवियस फ्लोर होना चाहिए, प्रोवाइडेड विद वाटर एंड ड्रेनेज होना चाहिए। देन देयर इज सैनिटरी एंड मस्ट बी मेंटेन इन must be present in every house. हाउसिंग स्टैंडर्ड्स रूरल में रूम्स मिनिमम 2 होने चाहिए। 1/3 ऑफ टोटल एरिया बिल्टअप होना चाहिए। किचन में सेपरेट किचन विद पेव्ड प्लेटफॉर्म होना चाहिए।
विंडो एरिया 10% ऑफ फ्लोर एरिया होना चाहिए वहाँ पर, जबकि 20% है। सैनिटरी ट्यूबवेल विद इन हाफ माइल होना चाहिए एंड कैटल शेड 25 फीट अवे होना चाहिए ग्रेटर दैन। इंदिरा आवास योजना होती है नेशनल रूरल हाउसिंग सर्विसेज। Overcrowding of the refers to a situation in which more people are living in a single dwelling so that movements are restricted. More people are living in a single dwelling. Movements are restricted. Privacy is secluded. Hygiene becomes impossible and sleep is disturbed. वन रूम स्टैंडर्ड्स क्या है? पर्सन पर रूम, वन रूम यानी 2 लोग रह सकते हैं, 2 रूम यानी 3 लोग रह सकते हैं, 3 रूम 5 लोग, 4 रूम 7 लोग एंड 5 और मोर रूम 10 लोग। Floor space, baby under 1 year is not counted and children between 1 to 10 years are counted as half a unit. Floor space कितनी चाहिए? 50 to 70 हाफ a person रह सकता है, 70 to 90 में 1, 90 to 100 में 1.5 एंड 100 स्क्वायर फीट में 2 लोग। Sex subdivision, 2 persons over 9 years of age, not husband and wife of opposite sex are obliged to sleep in the same room. 2 persons over 9 years of age, not husband and wife of opposite sexes are obliged to sleep in the same room. Sanitation barrier. Sanitation barrier is segregation of excreta by imposing a barrier. Segregation of excreta by imposing a barrier. Barrier to prevent spread of fecal-oral diseases. Segregation of feces हो सकता है, प्रोटेक्शन ऑफ वाटर सप्लाईज होती है, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन, कंट्रोल ऑफ फ्लाइज एंड प्रोटेक्शन ऑफ फूड. Segregation of feces, protection of water supplies, maintenance of personal hygiene, control of flies, and protection of food. Segregation of feces, protection of water supply, maintenance of proper personal hygiene, control of flies, and protection of food. Sanitary latrine, disposal pit, sewage system, sewage treatment plants.
सो हो गई मेरी एनवायरमेंट एंड हेल्थ वाली यूनिट पूरी हो गई है। नेक्स्ट मैं करने वाला हूँ मेडिसिन एंड सोशल साइंस वाली यूनिट। ओके सो लाइक कितना 22 मिनट्स में हो गई, 21-20 मिनट्स में हो गई एक यूनिट आधी सी। एंड आई डोंट थिंक सो कि ये वाली भी थोड़ी ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है ना ज़्यादा छोटी है, ठीक ठाक ही दिख रही है। 27 अप्रोक्स 27 इसके पार्ट्स हैं, उसमें से सिर्फ जो एकदम इम्पोर्टेंट वाले हैं वो मैं उठा के पढ़ने वाला हूँ, तो दैट वुड नैरो इट डाउन। सो स्टार्ट कर किया जाए, लाइक करते हैं स्टार्ट। पीएसएम यार मैं बोलूँगा मेरा वन ऑफ द मोस्ट अन क्या बोलूँ वन ऑफ द लीस्ट इंटरेस्टेड सब्जेक्ट हूँ मैं इसमें। वन ऑफ द लीस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एमबीबीएस का। बाकी सारे तुम कोई भी उठा के देख लो, तुम्हें मज़ा आएगा, है ना। कुछ ऐसा लगता है कि मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा नया नया कुछ सीख रहे हैं, ये है वो है। वेयरएज इन पीएसएम बहुत ठीक है, अपने आप में सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बट थोड़ा सा ना इसको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए एंड बोरिंग हो जाता है ओवर टाइम ये थोड़ा, अगर इसको ढंग से ना पढ़ा जाए। तो इसलिए ना इसको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आलस आता है मुझे, बट नेवर माइंड, करना तो है ही एट दी एंड। देखो अब रो के करो कि हंस के करो, वही बात है। Social and economic resources to sustain emotional and physical well-being among people that satisfy their needs in their unique environment. Community health का मतलब क्या हुआ? Environment and environmental, social and economical resources to sustain emotional and physical well-being among people that satisfy their needs in their unique environment. It includes all the health and environmental services in a community, irrespective of whether it is public or private. Community health has replaced the term public health, environment health, preventive medicine, social medicine. Social scientists are workers stepping up to the field of community health, working on the problems of mental health, hospital organization, social class difference and diseases. Resistance faced by community health workers क्या होता है in their field work are immunization against communicable diseases, family planning program in India, installation of sanitary latrines, and infant rearing practices. Infant rearing practices. Community a social group determined by geographical boundaries, common values and interests. Social defense, preventive and therapeutic rehabilitation services for protection of society from antisocial and criminal conduct of man. Preventive, therapeutic and rehabilitation services for protection of the society from antisocial and criminal conduct of man. Preventive, therapeutic and rehabilitation services for protection of community of society from antisocial and and criminal conduct of man. जो भी ऑनलाइन है देख रहा है, हैप्पी न्यू ईयर भाई, जो भी है, भाई बहन जो भी हो तुम। कल्चर, लर्न बिहेवियर विच हैज़ बीन सोशली एक्वायर्ड, लर्न बिहेवियर विच हैज़ बीन सोशली एक्वायर्ड. Culture is transmitted from one generation to another. Learned behavior which has been socially acquired. Learned behavior which has been socially acquired. Culture is transmitted from one generation to another. Stand for custom, beliefs, laws, and religion. Acquired by member of society. Acculturation क्या? Acculturation. Cultural contact or mixing of two culture. Acculturation is cultural contract or cultural contact or mixing of two cultures. Cultural acculturation. And there is contact between two people with different cultures. Contact between two peoples, different cultures क्या हो सकते हैं? There is diffusion of culture in both ways. Occurs due to socialization. Occurs due to socialization.
occurs through socialization, conquest, propagation of religion, trade and commerce, industrialization, education. Established pattern of behavior within a particular social setting, divided into folkways, right for doing things, more strict customs. Social pathology, study of relationship between disease and social condition, social disorganization. Relationship. Social pathology is study of relationship between disease and social conditions. Relationship between disease and social conditions, social disorganization. Study of social problems which cause disease in a population. Study of social problems which cause disease in a population. किन वजह से हो सकते हैं? सोशल कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, सोशल इवल्स हो सकते हैं, सोशल डिवियंस हो सकते हैं. Constraints are illiteracy, poverty, migration, urbanization and industrialization, environmental crisis. Evils: smoking and drinking, gender bias, gender discrimination, child neglect, child abuse, child labor, prostitution and crime. Social deviance: drug abuse, juvenile delinquency and suicide. Social problems affect a large number of people, they become social problem. Family: it is a group of biologically related individuals living together and eating from a common kitchen. Biologically related individuals living together and eating from the same kitchen, from a common kitchen. Most powerful example of social cohesion, bridge between generations and transfer point of civilization. Basic or primary unit of all social societies. Family act as a biological unit, pool of genes होते हैं क्योंकि
Social units is a common physical environment, social environment. Culture units shares a common culture and belief. फैमिली साइकिल, फैमिली साइकिल के पार्ट्स होते हैं फॉर्मेशन, मैरिज होती है, एक्सटेंशन फर्स्ट बर्थ, कंप्लीट एक्सटेंशन बर्थ ऑफ लास्ट चाइल्ड, है ना. कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट चाइल्ड लीव्स होम, complete contraction last child leaves home, dissolution first spouse dies. टाइप्स ऑफ फैमिलीज, दो फैमिली होती हैं, तीन फैमिली मानते हैं. न्यूक्लियर फैमिली हो गई, एलिमेंट यानी यूनिटरी मैरिड कपल, हस्बैंड वाइफ है, देयर डिपेंडेंट चिल्ड्रन है. न्यू फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिली अंडर 10 years ऑफ ड्यूरेशन, इंपॉर्टेंट स्टडी रिलेटेड टू फैमिली प्लानिंग. जॉइंट फैमिली यानी एक्सटेंडेड फैमिली होती है, नंबर ऑफ मैरिड कपल एंड देयर चिल्ड्रन, number of married couple and their children living in the same household, sharing the same kitchen and having a common family purse. All males are blood relatives, while females and wives, daughters, sisters, and widow. Property is held common and all authority is vested in senior male member of the family. थ्री जनरेशन फैमिली में क्या होता है, एक्सटेंशन होता है जॉइंट फैमिली का. यंग कपल्स लिविंग विद देयर पेरेंट्स एंड हैविंग देयर ओन चिल्ड्रन, कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ थ्री जनरेशंस. लोग मीम्स भेज रहे हैं, पढ़ लो भाई पढ़ लो. मीम से घर नहीं चलता है ना, मीम से घर नहीं चलता है. ऐसी ठंड हो रही है ना यहाँ पे, मैं 2 लेयर पहन के बैठा हूँ एंड खिड़की दरवाजे सब बंद हैं, फिर भी ठंड लग रही है गंदी वाली. नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स फैमिली, यानी फैमिली इन्वॉल्विंग मोर देन 2 adults, 2 adults से ज़्यादा है तो कॉम्प्लेक्स फैमिली होगी. कम्युनल फैमिली में ऑल इट्स मेंबर्स आर प्लेइंग द पार्ट इन इट्स मैनेजमेंट, डिवीजन ऑफ लेबर है. Conjugal family, nuclear family of adult partners and their children, where relationship focus on emotional bonds rather than strict duties and obligations. Matrifocal consists of mother and her children. Consanguinal consists of mother and her children and other people, usually the family of mothers. मामा ताऊ, मामा मौसी हुए, मामा मौसी नानी. Dysfunctional family, family in which conflict may appear and even abuse of on member occurs continuously. फंक्शन क्या है फैमिली का, रेसिडेंस. पैक्टिव लोकल रेसिडेंस, वाइफ गोज टू हस्बैंड्स हाउस. मैक्टिव लोकल, हस्बैंड गोज टू वाइफ्स हाउस, घर जमाई. डिवीजन ऑफ लेबर, कम्युनल फैमिली और मेंबर्स ऑफ प्ले पार्ट इन द हाउस होल्ड. ब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन हो सकता है, केयर ऑफ इन्फेंट एंड चिल्ड्रन. सोशलाइजेशन, कल्चर पैटर्न, ट्रेडिशन, कस्टम, लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस, ईटिंग हैबिट्स. इकोनॉमिक फंक्शन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, सोशल केयर, गिविंग स्टेटस इन द सोसाइटी, यूज ऑफ फैमिली नेम्स, care of dependent, sick, pregnant, aged. Increased compliance, example dots. Personality formation, shock absorber, stress, stable relationships.
कल्चरल फैक्टर्स इन हेल्थ एंड डिजीज, सुपर कॉज में कॉन्सेप्ट ऑफ इटियोलॉजी एंड क्योर, क्यों हुआ है एंड इसका क्योर क्या हो सकता है। तो रात ऑफ गॉड कहते हैं छोटी माता यानी चिकन पॉक्स को पूजा करते हैं। ब्रीच ऑफ टैबू, कुछ उसने जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया, वेंडल डिजीज हो सकते हैं। डिकोर्स विद लोकास वुमन, पास सिंस, पिछले जन्म का पाप, लेप्रोसिटी को मानते थे। ईवल आई चिल्ड्रन को नज़र लग गई है। स्पिरिट इंट्यूशन, हिस्टीरिया एंड एपिलेप्सी को स्पिरिट इंट्यूशन मानते हैं कि इसको कोई भूत ने पजेस कर लिया है। फिजिकल कॉजेज, इफेक्ट्स ऑफ वेदर, हीट स्ट्रोक, अटैक ऑफ फ्लू, और ये सोल्स ऑन आर्म, पन्ना, मैंगो पल्प। इम्प्योर ब्लड, स्किन डिजीजेस के भी हो सकती हैं। इम्प्योर ब्लड, सोनी लीव्स आर ईटन, ब्लड में कुछ हो गया है। एग्जिस्ट करते हैं यार ये सारी चीज़ें, मेरे घर में मैंने खुद देखी हैं थोड़ी बहुत। तो ये टारगेट नहीं प्रिपेयर्ड फॉर पीयू, ब्रो पीयू जो है हो गए हैं मेरे पोस्टपोन 10 दिन से। एक मतलब 3 से शुरू होने वाले थे एंड नाउ उनको एक हफ्ता 2 हफ्ता जो है, एक हफ्ता पोस्टपोन कर दिया है। 11 से शुरू होंगे विच इज़ ऑल्सो माई बर्थडे, बट ठीक है अब जो भी है। एंड हैप्पी न्यू ईयर भैया। और गौरव कैसा है भाई, हैप्पी न्यू ईयर तेरे को। हाँ मैं समझ गया था तेरी डीपी देख के, मेरे को तेरी डीपी याद है। और कैसा चल रहा है भाई तेरा सब। तुझसे बात करनी है यार मेरे को, मतलब मैं सोचता हूँ एंड देन भूल जाता हूँ, बट मैं तेरे को करता हूँ मैसेज इसके बाद ना। एंड क्या चल रहा है तेरा, तू यहीं पे बता दे काम करके क्या चल रहा है कैसा चल रहा है, तो अपन करते रहते हैं बात थोड़ी। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, dispose of human excreta open field, rural areas considered harmless, building towards home are not accepted. Disposal of waste, solid waste thrown in front of houses and not to decompose onto use as manure as fuel. एग्ज़ाम है 6 से बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी। अरे भाई वो तो ठीक है, तेरा नीट का कैसा चल रहा है यार। तेरा नीट का पता, मेन तो बाकी बायो इन्फॉर्मेटिक्स तो होता रहेगा तेरा, नीट बता तू अपना। वाटर सप्लाई वेल्स इन विलेज आर यूज फॉर ऑल पर्पसेज, दैट इज ड्रिंकिंग बैड थिंग। पर मैं तो नीट पे ही ध्यान दे रहा हूँ, बस यही करना है अपने को, नीट पे ध्यान दे तू। एंड इस बार अपने को देख, जनवरी शुरू हो गया है, 4 महीने हैं, तू मान के चल 3, उस हिसाब से पढ़ाई कर। दूसरों को पढ़ाई की ऐसी मैं टिप्स दे रहा हूँ, खुद यहाँ मेरे लगे पढ़े। वाटर सप्लाई well simply they used for all purposes, drinking, bathing, washing clothes, simple rivers considered holy, and during dipping water sacred, stabilize versus warm disease, housing, sleep, कच्चे होते हैं, plastic with mud, covering, and no separate kitchen toilets, or animal keeping. Food habits of people are influenced by religious and custom beliefs, generate body heat, engage, agri खा लो, cool for the body, curd, lemon, etc. Mother and child using good purposes, oil bath, massage, it made for pregnancy, nutritional delivery, cholesterol and harmful and drained away. Personal hygiene, दातुन, दातुन टीथ के लिए एशेस में चारकोल यूज होता है। नहीं often हबल बबल, हुक्के को इंग्लिश में हबल बबल कहते हैं। burning egg of cigar in mouth, oral cancer. Menstruation for prime tempers, early with a social custom. Polygamy men with several women, polyandry men with several men with one woman. ऑर्गेनिक कर लिया है, आईओसी का एक चैप्टर बाकी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिजिकल का रिवीजन करूँगा, लेक्चर नहीं लूँगा। बढ़िया है, मतलब ऑलमोस्ट तेरी केमिस्ट्री निपट गई है बेसिकली, अगर मैं बोलूँ तेरी केमिस्ट्री हो गई है। बायो कर लेगा, फिजिक्स पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना,
है ना। भाई बढ़िया, इस बार तो फोड़ेगा तू, इस बार तो फोड़ रहा है, मैं कह रहा हूँ। है ना। बढ़िया यार, करते रहो ऐसे ही। आपसे पूछना था कि फिजिक्स का लेक्चर लेने की इच्छा नहीं में की इच्छा नहीं है। हाँ तो देख, अगर तू कॉन्फिडेंट है इसमें कि तेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तेरे को समझ आ रहा है कि हाँ कि मैं कर पा रहा हूँ, क्वेश्चंस तुझसे बन रहे हैं, ऑफ कोर्स तू मत ले लेक्चर्स, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तेरे को कहीं पे कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है, लग रहा है कि ज़रूरत है, मेरे को थोड़ा सा और एफर्ट चाहिए, किसी की हेल्प चाहिए, तो देख, क्योंकि 3 महीने बचे हैं। एंड लेक्चर अलग से भी मतलब, मैं कह रहा हूँ ना, बायोमेंटर्स का ऑनलाइन यूट्यूब पे डाल रहे हैं ये लोग लेक्चर्स, तो वहीं से देख ले। कोर्स वहीं पे ये लोग कर रहे हैं, करा रहे हैं कंप्लीट, तो उसके थ्रू देख ले, सबसे बेस्ट रहेगा। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, सक्सेसफुल डॉक्टर इज वन हु नोस हाउ टू कम्युनिकेट विद हिज हर पेशेंट। कैसे बातचीत करनी है। 3 लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्लेन, इमोशनल प्लेन एंड कल्चरल प्लेन। Easy to understand explanation of patient condition, simple terms. When practitioner of modern medicine comes from well-to-do family and tend to be sophisticated, this leaves a wide gap between intellectual level and little masses known as social distance. Okay. Emotional sympathetic ear होना चाहिए. Hmm. Culture should be aware of culture custom community, which indigenous folk system and part of that community. Medical ethics, no problem. Chinese and Indian tradition, medical biotechnology, and human rights. हवा कहाँ से आ रही है यार। भाई ठंड में एग्ज़ाम होने का सबसे बड़ा यही डिसएडवांटेज होता है कि ठंडी हवा चल रही है हर कहीं से। हाँ मैंने नीट प्रेप के जंबो टेस्ट सीरीज़ ले ली है, पर अभी तक टेस्ट नहीं दिया। ऑफलाइन लूँ कि नहीं। Hmm, यार मेरी बात तो तू ऑफलाइन मत ले, क्योंकि तू अभी तक ऑनलाइन ही नहीं दिया है, तो ऑनलाइन दे। एंड बाद में मैं क्या बोलूँगा कि वो जो पेपर है उसके तू कहीं से प्रिंट आउट निकलवा पाए, है ना। मैं सेम चीज़ करता था, मैं बताता हूँ क्या करता था। जो अपना A4 पेपर होता है, लाइक A4 है, तो उसको हाफ में डिवाइड कर दिया, लाइक एक पेपर पे 2 साइड प्रिंट हो रही हैं, ऐसे आगे पीछे नहीं, हॉरिजॉन्टल है एक पेपर, दिस इज साइड वन, दिस इज साइड टू, है ना, एक ही पेपर पे आ गया। तो उससे क्या है ना, ऑफलाइन लुक नहीं, प्रिंटर है, तू अपने लैपटॉप के थ्रू उसके सेटिंग्स कर सकता है इसमें। तो हाफ पेज वन, लाइक दिस इज पेज वन, दिस इज टू, सेम साइड पे उसको पलटेगा, 3 4 ऐसे अब बना करके कर सकता है। तो इससे ना काफ़ी, हाँ, कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। तो ये तू कर सकता है। एग्ज़ाम हो गया तेरा ऑनलाइन वाला, उसके बाद तू ये कर सकता है आराम से, कि अगर तेरे को ऑफलाइन प्रैक्टिस के लिए करना है वो कर ले। मैंने सेम चीज़ यही करी थी अपने ड्रॉप ईयर में। आपसे ऐप्स ऐप से हो जाता है। हाँ अच्छी बात है। ये ना मतलब एफिशिएंट है थोड़ा, कि हर पेज पे, अब वहाँ पे तो तुमको एक्चुअली नीट के एग्ज़ाम में मिलेगा एक पेज पे पूरा, बट अभी के लिए अपने को थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करनी है, अगर पैसे बचाने के लिए तो कर सकते हो, आराम से हो जाएगा। और हम छोटा होता है थोड़ा सा दिखने में, मतलब दिक्कत आएगी, बट ठीक है, थोड़ी सी जो है ये चीज़ भी करनी चाहिए। आपका जीवन कैसा। मेरा जीवन भाई, मेरे हैं PU, यानी प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, एंड देन फेबररी में यूनिवर्सिटी रहेंगे 20 फेब से। तो लाइक आगे के जो 3 महीने मेरे, मार्च तक के, मार्च में हो जाऊंगा मैं एक्चुअली फ्री। बाकी तो पैक्ड है, यानी पैक्ड है, लाइक अब पूरा जो भिड़ के पढ़ने वाला होता है वो शुरू हो गया है। एंड मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मेरे को कोई व्लॉग बनाना, एडिटिंग करनी है, एंड जो रील्स बनानी है, तो वो कैसे होगा। थोड़ा सा उसका जो है, अब थोड़ा एक बैकफुट पे आ जाएंगी वो सारी चीज़ें। ठीक है, कर लेंगे लेकिन।
Operational research, application of scientific methods to study human organization and services. Application of scientific methods to study human organization and services. To learn knowledgeable institution and people working in communities served by them. Phases of operational phases. Formulation of problem, collection of data, analysis of data, deriving solutions, forecasting results, testing solution, pilot projects, implementing the solution. तो यानी कि क्या है प्रॉब्लम, फिर उसके बाद डेटा कलेक्ट करो उससे रिलेटेड, फिर उसके बाद उसको एनालाइज करो, देन उसके बाद सॉल्यूशन बनाओ, देन उसके बाद फोरकास्टिंग रिजल्ट्स, इसको क्या बोला जा सकता है फोरकास्टिंग को, इम्प्लीमेंट। प्रॉब्लम मतलब पहले तो फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम की प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करा जाएगा, डेटा कलेक्ट करना है, उसको एनालाइज करेंगे, सॉल्यूशंस डिराइव करेंगे, फोरकास्ट करेंगे रिजल्ट्स को, इम्प्लीमेंट करेंगे पायलट प्रोजेक्ट्स में, एंड देन उसको फाइनल टेस्ट करेंगे पायलट प्रोजेक्ट्स में, एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। SES सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या होता है? SES अर्बन स्केल्स एंड रूरल स्केल दो होते हैं। BG प्रसाद स्केल होता है दोनों जगह पे, अनादेश श्रीवास्तव स्केल इन मॉडर्न इन अर्बन, एंड उदय पारिक स्केल मॉडिफाइड कुप्पू स्वामी स्केल। स्टूडेंट स्केल भारद्वाज स्केल होता है, एंड नॉन इंडियन स्केल हॉलिंग सेट स्केल ऑक्यूपेशन बेस्ड इंडस्ट्रियल स्केल। कुप्पू स्वामी अर्बन फैमिली स्केल होता है, 3 पैरामीटर पे काम करता है। थैंक यू भैया, आपसे मेरा आपने मेरा हमेशा सपोर्ट किया है, तो इससे आप लगातार मदद करी है, थैंक्स। अबे अपन 22 से जुड़े हुए हैं साले वो 23 का कह रहा है, 22 से जुड़े हुए हैं अपन। एंड भाई ऑलवेज यार, मैं भाई देख, तू तो ठीक है, तू बहुत टाइम से जुड़ा हुआ है, तू जानता है कि हाँ कि अपन कैसे मतलब अपनी ट्यूनिंग हो गई अच्छी खासी। मैं हर किसी के लाइक जो भी थोड़ी गाइडेंस चाहिए किसी को, कुछ भी किसी को हेल्प चाहिए, तो मैं हमेशा रेडी होता हूँ उसको, जो भी मैं मेरे से बन पाता है। मैं ये नहीं बोलूँगा मैं सब कर दूंगा, सब ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मेरे से जितना बन पा रहा है मैं उस एफर्ट को बिल्कुल डालूंगा कि तुमको, हाँ तुम्हारी जो प्रॉब्लम है थोड़े बहुत भी अगर सॉल्व होती है तो मैं खुश होता हूँ उस चीज़ से, ठीक है। तो हाँ, तू फोड़, देखो जब भी लगता है कि ज़रूरत है किसी से बात करने की, नॉट जस्ट एकेडमिक या कैसे भी बात करनी होती है को, तू कर मैसेज मेरे को, बिल्कुल तू कॉल करता है, आई नो सब करता है, थोड़ा सा मैं भी जो है बिज़ी हो जाता हूँ इधर उधर, नहीं कर पाता कभी, बट तू भी जो है लगा रहे अपना फोड़, है ना। एंड मेरे को इस साल मिठाई खानी है तेरे हाथ से, ठीक है। तू फोड़, तू कर, तू सेलेक्ट हो, मैं आऊँगा इंदौर, एंड तेरे हाथ से मिठाई खाऊंगा ज़रूर, ठीक है। थम्स अप ऐसे करके भेज देना कि हाँ भैया आप जब भी आओ, जब भी आओ मेरे को बताना, एंड अपन चलेंगे, ठीक है। मेरी तरफ से ट्रीट रहेगी और तेरे को। कुप्पू स्वामी स्केल फॉर अपन फैमिली स्केल होता है, 3 पैरामीटर पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है डन। एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द फैमिली 1 से 7 स्कोर है, ऑक्यूपेशन ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली 1 से 10 का स्कोर, एंड टोटल पर कैपिटा इनकम ऑन द फैम पर मंथ। सबको प्रसाद मिलता है, प्रसाद स्केल ओके, प्रसाद सबको मिलता है, यानी BG प्रसाद स्केल जो है अर्बन रूरल दोनों के लिए है। शहरी से वास्तव की का कुल जल प्रसाद BG प्रसाद फॉर बोथ एजुकेशन ऑक्यूपेशन एंड टोटल पर कैपिटा इनकम फॉर बोथ अर्बन एंड रूरल फैमिली बेस्ड ऑन पर कैपिटा मंथली इनकम। ओडाई पारिक स्केल रूरल फैमिली स्केल होता है, 9 पैरामीटर नॉन डिपेंडेंट ऑन इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, कास्ट, फैमिली मेम्बर्स कौन कौन है,
social participation, land, house, material possession, and firm power. भाई आपने बोल दिया है तो इस बार फोड़ना ही होगा। ये क्लिप काटनी पड़ेगी, या आप अपना एक ऐसा जैसा आपने बोला एक वीडियो बना के भेज देना, मैं रोज वो वीडियो देखूंगा। अरे भाई तू थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ये। नहीं, इन सब की ज़रूरत नहीं है तेरे को। तेरे अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए बिल्कुल, एंड तू कर लेगा, मेरे को इतना पता है। तू लगा हुआ है 3 साल से, 2 साल से। तू कर लेगा लेकिन इस साल, ठीक है। बस थोड़ा सा और पुश कर ले खुद को। जो तेरे वीक एरियाज हैं उन पे काम कर, ठीक है। नहीं, व्हाट इज दिस नहीं? फोड़ना ही पड़ेगा नहीं। वाई नहीं? सोशल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी दैट सोसाइटी furnishes against certain risk to which नहीं भेजना, नहीं भेजना, नहीं भेजना वीडियो। व्हाट इज नहीं भेजना वीडियो? वीडियो नहीं भेजना है कि वीडियो भेजना है, तो डिसाइड कर। सिक्योरिटी दैट सोसाइटी furnishes against certain risk, बस सिक्योरिटी दैट सोसाइटी furnishes social insurance program providing social protection against poverty, old age, disability, unemployment, etc. सिक्योरिटी मतलब भेजना, भेजना है। ठीक है, मैं बना के भेज दूंगा तेरे को। ठीक है, भेज दूंगा, हो जाएगा। तू अब जा पढ़, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कर तू। सिक्योरिटी दैट सोसाइटी furnishes against certain risk to which its members are exposed. सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम होता है, सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम होता है प्रोवाइडिंग सोशल प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉवर्टी, ओल्ड एज, डिसेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट। बिस्मार्क इंट्रोड्यूस सोशल इंश्योरेंस इन जर्मनी। सोशल इंश्योरेंस। बाय, हैप्पी न्यू ईयर, बाय। बाय ब्रो, ऑल द बेस्ट तेरे को, है ना। अच्छे से पढ़ना, फोड़ देना इस बार। sickness, maturity, old age, etc., डेथ एक्सेट्रा। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए मॉनिटरी बेनिफिट्स एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, ESI एक्ट है, फैमिली पेंशन स्कीम है, वर्क मैंस कंपनसेशन एक्ट है।
Social safety net, correctional services provided by state which prevent individuals from falling into poverty beyond a certain level. Unemployment benefit, universal health care, homeless shelters, minimum wage, subsidies, services such as public transport. High social safety net, high birth rate, high maternal mortality rate, high infant mortality rate. ओके, एक और यूनिट ख़त्म, मेडिसिन एंड सोशल साइंस। तुम लोग अगर ये सोच रहे हो कि मैं यूनिट पे यूनिट निपटाए जा रहा हूँ एंड मैं जो है सब कुछ आ जाएगा मेरे को, नहीं ऐसा नहीं है। मेरे को मिनिमम 4 बार 3 बार ऐसे पढ़ना पड़ता है, तब जा कर के मेरे को कुछ चीज़ें लाइक दिमाग में छपती हैं मेरे, जो मैं एकदम न्यू पढ़ रहा हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो हाँ ऑफ कोर्स छप जाती हैं तब के तब, बट कुछ चीज़ें हैं ऐसी, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को तब छपती हैं जब मैं 3 4 बार पढ़ूँ। तो अभी जो मैं बस हाँ देखे जा रहा हूँ कि ओके क्या होता है क्या होता है क्या होता है। उसके बाद जब मैं तीसरी बार पढ़ूंगा, दूसरी तीसरी बार चौथी बार, तब जा कर के मेरे को जो है दिमाग में अच्छे से बैठेगा वो। ओके सो एक और हो गई मेडिसिन एंड सोशल साइंस वाली यूनिट। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल हेल्थ, करी जाएगा यार। अरबित में मेरे को ना कम्युनिकेबल तो शायद होगा, नॉन कम्युनिकेबल वाला नहीं मिल रहा है इसमें। न्यूट्रिशन वेरी, न्यूट्रिशन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है न्यूट्रिशन। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीजेस, ये वाला देखा ना, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीजेस। आई बी बैक, थोड़ी देर में आता हूँ वापस।
And I'm back. यार your camera roll to get started. Green screen. मेरी ग्रीन स्क्रीन का क्या चक्कर है? अब इसको मैं हटाऊँ कैसे? यार ये ग्रीन स्क्रीन हटानी है मेरे को. रीटच क्या करा है इसने? हटाऊँ कैसे मैं इसको? जो भी अब. ओके, नेक्स्ट यूनिट कौन सी करी जाए? क्या हमें इम्यूनाइजेशन करना चाहिए या फिर डिजीज ट्रांसमिशन है एक. देयर इज अनदर यूनिट. एपिडेमियोलॉजी. ये वाला हो जाएगा. नेचुरल हिस्ट्री, मल्टी डायमेंशनल, ये वाला करा जा सकता है. Concept of health and diseases. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ठीक है. डायमेंशंस.
सिस्टम हेल्थ का तो मतलब पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा कुछ टॉपिक नहीं है जो तुम खास छोड़ सकते हो। दो चीज़ें हैं, कुछ परफॉर्मेंस स्किल छोड़ सकते हो, एक तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स छोड़ सकते हो, बाकी तो पूरा करना ही नहीं है ये। कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ। Indicators of health measuring used for measuring health status of community. Health status community को measure करता है. Ideal indicator should be valid, reliable, sensitive, specific, feasible and relevant. Valid, reliable, specific, sensitive, feasible and relevant. Ideal indicator should be valid, reliable, sensitive, specific, feasible and relevant. मोर्टालिटी इंडिकेटर्स आ गए इसमें. मोर्टालिटी, मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी, न्यूट्रिशनल एनवायरनमेंट, हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ केयर डिलीवरी एंड यूटिलाइजेशन, सोशल एंड मेंटल हेल्थ, सोशो इकोनॉमिक. मोर्टालिटी, मॉर्बिडिटी एंड डिसेबिलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी. पॉजिटिव मोर्टालिटी इंडिकेटर है years of potential life is lost by PLL. ग्रुप डेथ रेट्स आ गया, एज स्पेसिफिक डेथ रेट आ गया. फिर मोर्टालिटी रेट IMR आ गया. मोर्टालिटी, मॉर्बिडिटी, मोर्टालिटी, मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी. मोर्टालिटी, मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी. मोहित मंडलोई कहाँ हो भाई? भाई मैं हूँ विदिशा में, मेरा जहाँ पे कॉलेज है वहाँ पे हूँ, अपने रूम में. मोर्टालिटी, मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी, न्यूट्रिशनल एनवायरनमेंट. मोर्टालिटी, मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी, न्यूट्रिशन एनवायरनमेंट, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस. सोशल इकोनॉमिक स्टेटस हो गया. सोशल एंड मेंटल हेल्थ हो गया. हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ केयर डिलीवरी एंड यूटिलाइजेशन. हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ केयर डिलीवरी एंड यूटिलाइजेशन. पेज 5 और 6 नहीं है. अरे यार. PQLI, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स. फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स. इन्फेंट मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेंस. पढ़ते रहे भाई. हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर यशराज. अरे ब्रो कैसा है भाई? कैसा चल रहा है भाई तेरा? तेरे को भी हैप्पी न्यू ईयर. इंक्लूड्स इन्फेंट मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 1 year, literacy. Infant mortality, life expectancy at the age of 1 year, and literacy. Scale 0 to 100. 0 worst performance, 100 best performance. PQLI यानी कि फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स. फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स कंपोनेंट्स क्या है? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, लाइफ एक्सपेक्ट. सब ठीक भाई, सब ठीक, सब बढ़िया यार, बढ़िया है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 1 year एंड लिटरेसी, लाइक ILL. इल 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 हो गया इसका. इन्फेंट मोर्टालिटी हो गया. लाइफ
लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 1 ईयर हो गया एंड लिटरेसी हो गया. स्केल 0 to 100 चलता है. 0 हो गया बस, 100 हो गया बेस्ट. Human developmental index, life expectancy at birth, mean years of schooling and expected years of schooling, GNA gross national income per capita, LMG. Life expectancy at birth, mean years of schooling and expected years of schooling, gross national income per capita. Natural. Causative risk factor, population and its characteristics, behavioral, cultural and ecological elements. Time. Causative और रिस्क फैक्टर. causative और रिस्क फैक्टर हो गया. पॉपुलेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक हो गया. environment, behavioral, cultural and ecological elements. Behavioral, cultural and ecological elements. Natural history of disease signifies the way in which a disease evolves over a period of time from the early stage to its termination. ऐसे recovery हो सकती है, disability और death हो सकता है in absence of treatment and prevention. Absence of treatment and prevention. Best established by cohort studies, longitudinal study होती है. Pre-pathogenesis होता है and pathogenesis. Pre-pathogenesis phases preliminary to the onset of disease in man. The disease agent has not yet entered the man, but factors specified interaction with the human host or the existing environment. Interaction of agent host environment प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन पॉसिबल होता है. यहाँ पे पैथोजेनेसिस में एंट्री ऑफ डिजीज एजेंट हो जाती है सब्सेप्टेबल होस्ट में. डिजीज एजेंट मल्टीप्लाई एंड इंड्यूसेस पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस. Final outcome of the disease may be recovery, disability, or death. Host can also become a clinical case, subclinical case, or carrier. Secondary और tertiary level possible है यहाँ पे. Screening of disease may improve prognosis and increase survival.
नींद आ रही है यार अब तो। मुझे ऐसी भयंकर वाली नींद नहीं आ रही, मैं अभी शाम को सो के उठा हूँ, बट उबासी आ रही है। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन एंड मोड्स ऑफ इंटरवेंशन क्या होते हैं? 4 लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं: प्रिमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सो प्रिमोडियल में क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ द इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स। प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर, यानी कि हमारे जो रिस्क फैक्टर हैं आसपास, जैसे कि मॉस्किटोज हो गए, उन्हीं को हम अगर पैदा ना होने दें तो इट इज़ प्रिमोडियल। प्राइमरी प्रिवेंशन इन इट्स प्योरेस्ट सेंस। बेस्ट लेवल फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। एजुकेशन दे सकते हैं, चलो। ओबेसिटी प्रिवेंशन, एजुकेशन ऑन मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी वेट, प्रिवेंशन ऑफ लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन हैबिट्स एंड सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन। प्राइमरी में प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज के लेते हैं। इंटरवेंशन ड्यूरिंग प्री पैथोजेनेसिस स्टेज। एलिमिनेशन ऑफ रिस्क फैक्टर रिमूव्स द पॉसिबिलिटी दैट अ डिजीज विल एवर ऑकर। हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, एनवायरमेंट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, न्यूट्रिशन इंटरवेंशन जैसे फूड फॉर्टिफिकेशन कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियरल चेंजेस कर सकते हैं। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अप्रोचेस, मास स्ट्रेटेजी फॉर होल पॉपुलेशन, हाई रिस्क फॉर इंडिविजुअल एट रिस्क। Specific immunization, chemoprophylaxis, contraceptive, iodinization of salt, deprivation of water, national iron plus initiatives, wearing of gloves by elders. सेकेंडरी में हम करते हैं halt the progress of disease at its insequence and prevents complication in early pathogenesis phase. More expensive and less effective than primary prevention. Target group in secondary prevention is patients. Early diagnosis and treatment is its best level of prevention for breast cancer. Tertiary prevention limit the impairment and disabilities. During and late pathogenesis phase of disease, modes of intervention. Disability limitation prevent transition of disease from impairment to handicap. Prevent transition from disease to from impairment to handicap. Spectacles हो गए, physiotherapy for poliomyelitis, resting limb neutral position in polio. Disease, impairment, disability and handicap. Web of causation. It is a study of chronic disease. Disease agent is often not known and outcome of interaction between multiple factors: biological, environmental, immunological, nutrition, genetics, social, spiritual.
Web causation considers all predisposing factors and their interrelationship with each other, helps to suggest ways to interrupt the risk of transmission. ओके, आधा भी बचा है ये वाला। लाइक हाँ, आधा ही है। एक, दो, तीन, चार, एक, दो, 3 पेज बचे हैं। तीसरा वैसे कुछ है नहीं खास इसमें पढ़ने को तीसरे पेज में, तो दैट वुड मेक इट 2 पेजेस ओनली। तो आई गेस ख़त्म करते हैं इसको। 3 3 मिनट हो जाएंगे आज के मेरे, तो बहुत सही हो जाएगा। ख़त्म करते हैं। मैं सोच रहा था कि अभी काफ़ी बचा होगा तो बाद में देखता हूँ उसको, बट 2 पेज हैं, निपटाते हैं जल्दी से। मॉनिटरिंग कंटिन्यूस ओवरसाइट ऑफ एक्टिविटीज टू इंश्योर दैट दे आर प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू द प्लान, the improvement of air pollution, water quality index, etc., done by technicians. Objective analysis of routine measurement aimed at detecting changes in environment. Surveillance क्या होता है? Continuous scrutiny of factors that determine occurrence and distribution of disease. Epidemiological surveillance, demographic surveillance, nutrition surveillance, sentinel surveillance. Carried out by professionals. Objective health planning, control of disease, data on new and changing trends. टाइप्स होते हैं, 3 टाइप का होता है: एक्टिव, पैसिव एंड सेंटिनल. Health worker actually goes house every fortnight to detect cases and collect data. National Vector Borne Disease Control Program (NVBDCP). पैसिव सर्विलेंस क्या है? पैसिव सर्विलेंस में डेटा इट इज इटसेल्फ रिपोर्टेड टू हेल्थ सिस्टम पैसिवली, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में. सेंटिनल सर्विलेंस क्या होता है? आइडेंटिफाइंग मिसिंग केसेस एंड सप्लीमेंटिंग नोटिफाइड केसेस, डन इन NSCP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NSCP. नाम होता है ना उसको, तो ऑर्गेनाइजेशन होता है. एक्टिव एंड पैसिव में क्या होता है? एक्टिवली कलेक्टेड, पैसिवली रिपोर्टेड. Health system staff actively goes to patient and gather data. Data is itself reported to health system passively. The fever cases and blood sites के लिए patient coming to PHCH से private practitioners. Targeted for elimination and eradication. Target for control. It includes NVBDCP, NLEP and National Health Programs of India. More expensive, less expensive. Pulmonary leprosy, tetanus, diphtheria, hepatitis, mumps. Sentinel surveillance. Study of disease. It's a study of disease rates in specific population to estimate trends in larger population. Identifying the missing cases, thereby supplementing the notified cases. Identifying new plus old cases. Estimate disease prevalence. True morbidity measured by sentinel surveillance.
नींद आ रही है भाई, उबासियों पे उबासियाँ आ रही हैं। One time activity in a circle stops once disease element eradicate fitness. You know the disease element eradicate. Smaller concept, broader concept, no feedback present, feedback present, no inbuilt action, component present. Monitoring of air pollution, water pollution, noise pollution. Example, demographic surveillance, national demographic surveillance, nutrition surveillance, sentinel surveillance. ICD क्या होती है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज होता है, produced by WHO, International Standard Diagnostic Classification for Morbidity and Mortality Data in the World. Based in health fields for biological and health management purpose. Revised every 10 years. It aligns with GLASS, Global Antimicrobial Resistance System. न्यू चैप्टर्स ICD में कौन कौन से आए हैं? Sleep wake disorders, conditions related to sexual health, disease of blood and blood forming organs, disorders of immune system, traditional medicine and extension codes. हो गया। तो भाई आज के 3 यूनिट हमने निपटाए हैं, 2.5 टू बी स्पेसिफिक। लाइव सेशन में पूरे दिन का अगर मैं बोलूँ तो 3 हो गए हैं मेरे। तो यार इसके साथ आज का हम ये लाइव सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ठंड बहुत हो रही है, सब लोग अपना ध्यान रखो, कंबल में घुसे रहो जितना हो सकता है, एंड मिलते हैं अगले लाइव सेशन में। तो तब तक के लिए बाय बाय।